Hello dear friends, I am Dr. Sanatan and I welcome you to this channel. In this video we will talk about the approach towards the preparation, the resource and its utilization, and how to revise efficiently. So whenever there is a cyclone, we will find two types of the trees. Type A, which is going to be absolutely rigid. It could not adapt itself when the situation was bad. And type B, which is absolutely flexible. It knows how to adapt according to the bad situations. और वो बच गया. So the key steps, key parameters in our approach are going to be flexibility and the ability to adapt. My dear friends, each of us are totally unique, and the problems, the challenges we have are also unique to us. So the approach of preparation cannot be same. It has to be flexible. So the way towards success is not a straight line. It's going to be zigzag in manner. We'll have to be flexible in our approach. कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा, कभी ठीक से टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी रिसोर्स में कोई इश्यूज आ जाएगा. एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू अडेप्ट इन दोज सिचुएशंस. कोई कहता है कि मैंने 2-3 महीने पढ़े एंड आई गॉट 200 प्लस मार्क्स. किसी ने कहा मैंने सिर्फ बीटीआर कर लिया एंड आई गॉट 200 plus marks. So dear friends, it might have worked for them, but it may not work for you. So at this moment we have ample amount of time and we should be utilizing this time perfectly without any error. So the resource, which resource to follow? Most of you already are using some sort of resource in this preparation. So our destination is going to be gaining 200 plus marks, for example, and passing the exam. And we are here at this time. And to reach our destination, there are multiple paths. And these pathways are your resources. And each of the resources are going to take you to your destination. किसी ने प्लेटफॉर्म X यूज किया, किसी ने प्लेटफॉर्म Y यूज किया, किसी ने प्लेटफॉर्म Z यूज किया, किसी ने प्लेटफॉर्म A यूज किया. So which platform should you use? The answer is whichever platform is familiar to you already. जिस रास्ते से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, there is no doubt that you are going to go through that route without much difficulties. Personally, I used cerebellum as my reference क्योंकि majority of the faculties से मैं acquainted था पहले से, and that helps, that familiarity helps you driven and motivated throughout the course, and everything depends on that. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैंने प्लेटफॉर्म X यूज किया एंड इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कहते हैं कि प्लेटफॉर्म X यूज किया एंड इट डिड नॉट वर्क रियली वेल. अजीब लगा. जस्ट ड्यू टू दिस फैक्टर, फैमिलियरिटी एंड द स्टेट ऑफ स्टेइंग मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रोसेस. लाइव क्लासेस यूज करना है, रैपिड रिवीजन, क्विक रिवीजन यूज करना है, सिर्फ बीटीआर करना है. सी, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, लाइव क्लासेस आर रियली यूजफुल क्योंकि लाइव क्लासेस करने से आप एक पर्टिकुलर शेड्यूल में रहते हैं एंड द मेंटोर्स आर पर्सनली फ्रेमिंग दिस शेड्यूल. दे हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड दैट रियली हेल्प्स. दैट एक्सपीरियंस really helps. Is RR enough? Yes,
Rapid revisions are absolutely enough to clear this exam. But it depends on you how well you can revise the content multiple times and how well you integrate them with each other and doing PYQs efficiently. Yes, rapid revisions are enough, absolutely enough. And what about BTR? So, dear friends, BTR is a great tool, but BTR is not a primary reference. BTR has to be an additional guide with your revisions. For example, you have already studied it, you have done the rapid revisions, or you have done the live classes, lap 1. Then during the second round of revisions, you are using BTR along with it to comply yourself. BTR is a great tool during the revisions. Yes, it's possible to score really great with help of BTR only, but it might not work for you. It depends on you how well you integrate each of the concepts. Live classes for first timers, rapid revisions, of course, possible, and BTR for revision purpose. I hope this statement will help to clear your doubts regarding your resource selection. So, कोई सब्जेक्ट आपने कर लिया and still you feel like you're lacking it. The problem is you are doing a subject from a reference and आपका कोई friend कहता है यार ये टीचर पढ़ा रहा है तो समझ नहीं आ रहा and आप उस बात से influence हो जाते हो. That doesn't mean the teacher is bad. आपने क्लासेस किए, आपने 2 रिविजन्स भी किए, फिर भी आप PYQs अप्रोच नहीं कर पा रहे, then there may be some error in the primary learning. In that case, you may think about filling that gap. वहां पे आप कोई एडिशनल रेफरेंस चूज कर सकते हैं, नॉट बिफोर दैट, नॉट अदरवाइज. एंड you can use AI as your helper. For example, I want you to install ChatGPT and वहां पे जाके आप ऐसा prompt डालिए कि I am a medical student and I am soon going to appear FMGE and NEET PG and I am going to call you by some name XYZ, for example Pikachu, and whatever question I am going to ask you, you are going to answer me based on the standard reference. Like Harrison's, Bailey's, Robbins, etc. So यहां पे ये नाम ऐड करने का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि whenever you call the AI with this name, it will remind itself कि आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस से जवाब देना है. So the next time you will ask that Pikachu, tell me about aortic aneurysms or some other concept, for example, so it will answer you according to the standard references. So that's a way to save yourself some time and fill the gap. How to revise? Well, I have a very specific schedule to revise in the last month, which was really helpful to me, and I am really grateful that I have it. And I will share that in a separate video later. So long-term potentiation is how many times you revise. How many times you revise. आप जितनी बार एक चीज को रिकॉल करेंगे
your brain is going to form synapses accordingly, और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिटेन होकर रहेगा. यूजिंग एक्टिव एंड पैसिव रिकॉल स्मार्टली. सो व्हाट्स एन एक्टिव रिकॉल? जब आप बिना किसी बुक को पढ़े, बिना लेक्चर को देखे, मन ही मन खुद किसी कॉन्सेप्ट को याद कर रहे हो, दैट्स गोइंग टू बी योर एक्टिव रिकॉल. एंड व्हेनेवर यू आर रीडिंग योर नोट, दैट्स गोइंग टू बी योर पैसिव रिकॉल. सो हाउ टू यूज देम स्मार्टली? For example, I've always told you that keep a rough copy along with you while you are studying, while you are attending the classes. और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के बस नाम लिखते चलो, कॉन्सेप्ट X, कॉन्सेप्ट Y, कॉन्सेप्ट Z. फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लास खत्म हो रहा है रात के 11 बजे एंड यू डोंट हैव मच टाइम बिफोर स्लीपिंग, राइट? आपको रात को अगर कुछ क्वेश्चन असेस करना है, अपने मिस्टेक कॉपी में क्वेश्चंस ऐड करने हैं, यू विल डू दैट इन द नाइट. और साथ ही साथ सोने से पहले यू विल जस्ट open your rough copy and you will read the names of the concepts. वो आपको याद दिलाएगा. For example, I have studied glycogen storage disorders. So just from this statement, I will remind myself, अच्छा, glycogen storage disorders, 1, 2, 3, 4, 5, 6, all the variants. I will remind myself from that one statement. So that is how the active recall will help you. Most of the students are going to the offline classes, जहां पे सुबह से शाम तक वो क्लासेस ही करते हैं. तो इन दैट केस, आफ्टर कमिंग फ्रॉम योर क्लासेस, यू आर गेटिंग 3-4 आवर टाइम फॉर एग्जाम्पल. उतने में आप करोगे पैसिव रिकॉल. आप फिर से अपने नोट्स निकालोगे, यू विल गो थ्रू देम पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, और आप पैसिव रिकॉल करके सोने जाओगे. एंड आफ्टर यू वेक अप, यू विल सॉल्व सम क्वेश्चंस to activate your mind, and then you will do that active recall जो आपने पिछले वाले दिन में, लास्ट डे में, अपने रफ कॉपी में पॉइंट्स ऐड करे थे. You will do the active recall before going to the classes. So that's how you use active and passive recall accordingly. So dear friends, about this image, there is a cage, and inside that cage there are 2 wolves, and the wolf to which you are going to feed more, it is going to get more powerful. जिस भेड़िए को आप ज्यादा खाना खिलाओगे, वो भेड़िया ज्यादा ताकतवर बनेगा, and it will kill the other one. One wolf is going to be your purpose, and one wolf is going to be your excuses. So no matter what happens, do not feed your excuses. जब भी आप कोई सिली सा एक्सक्यूज देने लगे खुद को या फिर किसी और को, remind yourself of your purpose, then act accordingly. Do not ever give excuses. The wolf to which you will feed more, it will grow stronger. The more you're going to sweat in the training, the less you're going to bleed in the war. So एक दोस्त ने मुझसे डायरेक्टली ब्लंटली पूछा कि भैया, टेल मी हाउ शुड आई स्कोर 200+. So dear, it's a long process. It's a process of 4.5 months remaining. Every day we are going to work for it. Recall that image of a doctor holding the hammer. The shaft of the hammer is your short term goal. आप अपने डेली के गोल्स पर टिके रहिए, then the target will definitely hit. The target will definitely hit. So this was it. From the next video itself, we'll start discussing the crucial parameters, crucial questions, and question solving, how to approach the question sessions in this channel. Please stay connected. See you soon.